जी बेटा नीचे रख दे stand up you all stand up come closer Isha come here you time अच्छा animal biology or botany is the biology is the science of the living thing. ठीक है, you know the science of life. Scientists divide how many types of things in that life. Two, which? Which type of life or which type of things are present here in the world? Two types. Living organism and non-living organism. Okay, so study of living organism is science or biology. ठीक है. Then further biology can be divided into the part of zoology. Zoological name of frog that's common called frog is Granategria. Okay, and this is this frog belongs to class amphibians. Vertebrates again divide into 5 groups now. Birds, reptiles, amphibians, and then the mammals. These are the further grouping. And this is amphibian. The frog is amphibian. What is the characteristics of amphibian? Living water and terrestrial life. They can live inside the water as well as outside the water. ठीक है? The frog can live on the land as well as on the water. Spot. And when it is inside the water, the skin has small pores, and when it is inside the water, it absorbs oxygen from the water with the help of this skin. Okay, so today we will dissect it and see the different parts, different systems. There are 3 main parts of the body: head, thorax, abdomen, and 2 types of limbs: hind limbs and forelimbs. These are the parts of the body. Simply you can see these parts of the body. Then we will dive big vein of the venous system in the center of the body or just beneath the skin. यानी इसके नीचे हम कभी भी सेंटर से इसको नहीं काटते क्योंकि इसके जस्ट इसके स्किन के नीचे बिल्कुल जो है वो जो मेन वेन है सिस्टम की, इसके वेनस सिस्टम की, जो कि सारा ब्लड जो है वो लेग और हाइंड लिम्ब में लेके आती है, वो जो है मौजूद होती है और वो कट जाती है, तो फिर हम इसका नर्वस उसका सिस्टम जो है वो वेनस सिस्टम हम नहीं देख सकते. तो इसको इसलिए कभी भी हम दरमियान से यहाँ से दरमियान में से नहीं काटते. इसको हम हमेशा कट लगाते हैं. नजर आ रही है. अगर हम दरमियान से काटते ही कट जाती है. हर जगह ब्लड हो जाना और ब्लड हो जाना तो हमें नजर ही ना आती कुछ. इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हैं.
Limbs and circulate the blood to the limbs. This is the thoracic bone. Okay. नहीं करते इसके आप फोकस डायसेक्ट करने का हम किसी और इंग्रेडिएंट को क्यों नहीं करते हम किसी और इंग्रेडिएंट को डायसेक्ट क्यों नहीं करते फोक को ही क्यों करते हैं It is included in all जी क्योंकि फ्रॉग जो है वो तकरीबन ही इंसानों की तरह इसके जो बॉन्स के नेम है वो भी वही बॉन्स के नेम इंसानों में भी है वही नेम ही इंसानों के बॉन्स पे और इसका तकरीबन सारा ही स्ट्रक्चर सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर अंदर ऑर्गन्स ये सारे ही ह्यूमन से मिलते हैं इसलिए Okay. See, stomach, digestive system. This is the digestive system, that is from the mouth, you know, the windpipe as well as the food pipes come and it ends into the stomach, and this is the stomach. This one is stomach, digestive system, and this is liver, this is heart, and this is spleen, and then the stomach, and then the small intestine and the large intestine. This is the digestive system. That is the food pipe, then stomach, then the small intestine, this one whole, and this is the rectum or large intestine. Okay, this is the digestive system, and this is the liver. एक सीजर पड़ी हुई है
See, this is the heart. This is the heart of frog. इससे करिए। See, this is the heart. ईशा को कलेजी निकाल के दे वो तो खून की कमी तो आपके अंदर है। ये इसका नर्वस सिस्टम आ गया। ये देखें नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रल कॉलम, vertebral column. Okay, these are the vertebrae, these are the nerves, and these are the kidneys. ठीक है, दो किडनीज होती हैं दोनों तरफ। ये इसके वर्टिब्रल कॉलम को जब हम हटाएंगे नीचे से, तो यहाँ से नीचे से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम, ये इसके पास है मेन, और ये लीवर, ये हार्ट, खून निकल गया सारा इसलिए। और ये बीच में डॉट्स जो है ब्लैक, वो गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर। ये इसके जो है वो टेस्टिस हैं। ठीक है, ये सारा इसका सिस्टम Bilal, what is digestive system? Can you see the organs of the? मैंने सिर्फ आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव का। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक। कहाँ है स्टमक? हाँ, स्टमक कौन सा बता? ये इतना बड़ा बड़ा ये स्टमक। ठीक है, एंड आफ्टर स्टमक दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और देन ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्प्लीन है। ये वो जो स्प्लीन कहाँ है? ये स्प्लीन वो नहीं होता जो, हाँ, वो जिसमें वो वेस्ट, हाँ, जे अब्जॉर्बर जो है वो। ये सारा इतना बड़ा सा है इसका, क्योंकि इतना बड़ा था ना। ये है स्प्लीन। ये नहीं, ये तो रेक्टम है। अच्छा, रेक्टम है हाँ, ये, लेकिन इधर ही होती है। और बेटा आप मुझे बताओ कि इसका नर्वस सिस्टम कहाँ है? इससे नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स पहले वो देखो कहाँ नजर आ रही है। ब्रेन है, वो हमें नज़र फिलहाल नहीं आ रहा। ठीक है ना, और ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है ना, और ये जो ये वाइट वाइट सी नजर आ रही है ना, जाते जाते से, ये इसके अंदर ही होता है।